तमाम चीज़ें मरीज़ ने खानी है, उस मुंह का कुछ ख्याल। सबसे ज़्यादा जो मैट ख़राब होता है इस हॉल का, ये ख़राब हो रहा है क्योंकि सब लोग चल के यहाँ से आ रहे हैं, और ये वाला मैट जो है वो शायद 5 साल में चेंज होता है. दिस विल चेंज twice a year. In the same way, so I like to draw attention towards the oral health. Little different, लेकिन इस वक्त globally इस पर बहुत काम हो रहा है. My point of concern is, can we brush our teeth in fasting? हमारे यहाँ की है कि मुंह से जो बू आती है वो मुश्क से बेहतर है, तो शायद मुंह साफ नहीं करना. Is there any risk between mouth odor and lack of brushing? क्या हमारा रोज़ा ख़राब तो नहीं हो जाएगा? क्या हम मिसवाक कर सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं? क्या एक माह के लिए ब्रश छोड़ देते हैं क्योंकि वो जो बू है वो मुश्क से बेहतर है? कुछ ऐसे मिथ्स हैं हमारी लाइफ के. जो लोग मुझे नहीं जानते, माई ब्रीफ बैकग्राउंड इज, आई डिड माई डेंटिस्ट्री फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई वेंट फॉर लंडन. आई एम अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन and did my fellowship in surgery and oral medicine, did my medicine surgery for there as well, and my 3rd fellowship of implant surgery. So this is a hadith, and we says कि with regards to use of this कि जो मुंह से बू आती है वो मुझसे बेहतर है. हमने इसको गलत कोट कर लिया है कि मुंह साफ नहीं करेंगे अल्लाह ताला खुश होंगे इसमें. हालांकि हमें रिकमेंडेशन मिलती है कि मिसवाक किया जाए रमज़ान के अंदर. So my main theme is body mass connection for the medical colleagues, because there is a huge connection between the oral health and the body cavity as well, body systems, क्योंकि इसमें दोनों का symbiotic relationship है करने के लिए. So dentist in the modern world is called an oral physician, not दंदान साज. हम दांत को ख्याल रखते हैं खाना खाने के लिए. We go different areas to have different kinds of food. लेकिन दांत ही नहीं है तो क्या करें? Isn't it? So the problem is कि हमने कुछ नए assumptions कर लिए हैं कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा. And I really appreciate the speaker in the morning. Rehan spoke brilliant कि शायद सब अच्छा हो जाएगा और रमज़ान में सवाब मिल जाएगा, हमें अफ्तारी बहुत सी खानी चाहिए, so and so forth. अलमिया ये है कि आपके मुल्क के लोग दांत साफ नहीं करते. Only 36% clean the teeth every day and 54% they don't do it every day. हमने पढ़ा कि रिस्क फैक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग के लिए पॉइंट ये है कि वो रिस्क फैक्टर क्या है जो हमें समझना है. We drink all these things and this would happen. क्या आपको पता है कोक पीने से दांत के बोन से गिरती है? I see this patient every day who are a coke drinker. क्योंकि बोन इज मेंटेन्ड बाय टीथ एंड टीथ विल गो अवे. WHO कहता है कि इस वक्त बर्डन हो रहा है दुनिया का, इसको बोलते हैं डिजीज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. आप सोच रहे होंगे रमजान में इन बातों का जिक्र किया है. होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. सो माय स्लोगन टू यू इज ब्रश योर टीथ एंड सेव अ लाइफ. आई टेल यू हाउ डू यू सेव अ लाइफ, बिकॉज देयर इज ए बॉडी माउथ कनेक्शन. सो रिमेंबर दिस, वी ट्रीट पीपल with teeth, not just teeth only. It used to be called, I remember Baqai Saab in his speech said, कि मियाँ इलाज दंदा was इखराज दंदा. लेकिन आज चीज़ें चेंज हो गई हैं और the call में says कि you have to work on the teeth with regards to the health as well. This is very important, क्योंकि अगर मुंह का ख्याल रख रहे हैं तो आप हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं. We'll see in a minute how does it work. क्योंकि पेशेंट आपके ओपीडी में आ रहे हैं इन मसाइल के साथ. नाउ इन मसाइल के साथ हेल्थ का ताल्लुक किसी को पता है? व्हाट्स द लिंक बिटवीन दीज विद द हेल्थ? भाई दांत साफ करो, निकालो, जान छोड़ो हमारी. हम तो बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, हार्ट डिजीज, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एंड ओबीजीवाई, सो ऑन सो फोर्थ. इसका लिंक है मुंह के साथ. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये तमाम रिलीजन्स में लिखते हैं, पीपल फ्रॉम इंडी कॉलेज, व्हाट आई एम सेइंग, इन सब का ताल्लुक आपके सिस्टमिक हेल्थ से. Each and everything is linked to these conditions, and we must take history with the oral health, because there is a body mass connection.
ये 3 पॉइंट समझ लीजिए कि मुंह से प्रॉब्लम सिस्टम में एंटर कैसे हो रही है. Because the bacteria, the toxins, they metastasize and leave the mouth, enter into the body cavities through the bloodstream. पहले क्या होता था कि लोग हिस्ट्री देते थे, तभी पहले के मियाँ मुंह दिखाओ, जबान दिखाओ, हलक दिखाओ. आज शायद आवाज़ ख़त्म हो गया. So the many people who have made a algorithm is called he and he not, that you must see the oral cavity with the body system. क्योंकि eyes are the windows to the soul and mouth is a window to general health. Now these many bacteria detected in blood circulation. ये आए कहाँ से? There was an autopsy of the choroidal vessel, and they found Streptococcus viridis and mutants. 90% of cardiovascular disease, MI patients have bad gum disease. So इन्होंने स्टडी किया और देखा कि अगर किसी के गम साफ कर दिए जाएं, तो उनका इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस टू वो कार्डियक एंड और डिजीज कम हो जाता है. And that's why I brought this topic in this podium. That by just cleaning the gums professionally at your home, you can treat people. H. pylori आपने eradicate कर दिया, खत्म हो गया by triple therapy, but they pop in and settle in the gum crevice, and they pop in back again in the gut and get recurrence. आप बात समझ रहे हैं? तो गम में एक कैविटी होती है जहाँ ये बैठते हैं और पार्टी करते हैं, और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यू गेट दिस प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन. बिकॉज ओरल माइक्रोबायोम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. इस वक्त दुनिया जा रही है प्रोबायोटिक्स के ऊपर, जा रही है. दे टॉकिंग अबाउट द माइक्रोबायोम ऑफ द गट एज वेल. सो द माइक्रोबायोम ऑफ द गट एंड द माउथ, दे एक्चुअली हील्स यू. How many antibiotics can you produce? What is the magic bullet? Eventually, they stop working, isn't it? So there is a connection between the mouth and the body cavity. Now, here comes diabetes. Sir, your podium. The point of thinking is patients who have systemic conditions that are not responding to medical treatment can benefit with dental care, sir. This for the study. Because every disease is inflammatory in burden. जो patient की body में जा रहा है, it's all inflammation. Or vice versa, dental treatment alone cannot treat the condition. So both have to work together, isn't it? That's very important. So publication, we work here as well in our college, and we found relation between oral disorders and hemodynamic parameters. So it is also going very fast in the world. लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि 20% लोगों को जो गम डिजीज हो रही है वो 44 इयर्स के हैं, और 40% को वो 60 इयर्स के अबव हैं. Global burden, non-NCD is getting more through this burden. So do you think while fasting, Prophet did not want us to clean our mouth? Do you think? So answer is no, because it was reported कि gum disease अगर ज़्यादा किसी को है 0.2 to more HbA1c बढ़ जाता है उसका. आप वहाँ कंट्रोल कर रहे हैं और मुंह गटर का परिंदा बना हुआ है, उसके HbA1c, उसका CRP, वाइट सेल काउंट बढ़ा होगा. नहीं घटेगा unless you liaise with your dental colleagues and work together. बिकॉज ये पूरा हाथ के बराबर सरफेस एरिया है तमाम गम डिजीज. तो अगर ये पूरा हाथ इन्फ्लेम्ड है, डू यू एक्सपेक्ट बॉडी? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सेंड योर पेशेंट रेगुलरली टू योर डेंटिस्ट. नॉट ओनली क्लीन द गम्स बट ऑल्सो डिक्रीज द बायोलोड एंड इन्फ्लेमेटरी बर्डन. So, if you do not clean the whole month of Ramadan, we get increased burden of disease. एक तो वजह है खाना खाना,
एक मुंह साफ ना करना जिसमें आपकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। अच्छा, समझ लें कि हो कैसा रहा है, बिकॉज इट्स अ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, interleukin 1, 6 and TNF factors, they also increases in the blood because of gum diseases and high value of white cell count and CRP, and that lead to the increase in sugar area as well. ये वो पेशेंट हैं जो डायबिटीज नहीं है और आप उनसे कह रहे हैं कि सब्जियां खा सकते हैं, चबा सकते हैं, प्रोटीन खा सकते हैं. So what's the point of having such a big list of diets and medication? वो तो सिर्फ क्वेकर ओट्स से खा रही है बेचारी, isn't it? उसकी उम्र दांतें नहीं है. So there was a study in China and they figured out कि 0.5 to 0.2 millimole change by just cleaning in the A1C. So I think we should send all the patient for this. ये diseases जो हैं इसका major cause मुंह से भी आ रहा है because of low grade inflammation. अब सवाल ये है कि करें क्या, what to do? So remember my slogan, brush your teeth, save a life. याद रखिए word biofilm. Plaque is an old terminology now. This biofilm has lots of bacteria. The list I give it to you. That has to be clean. मुझे बताएगा कि अच्छा, I'll hold this question in a minute. I'll come back. These fidget rings, माशाल्लाह, बहुत थोक भाव बोन को रिजॉल्व करता है. There's one study we found out कि हमने यही स्टडी की थी डेंटल कॉलेज में कि फूड कस्टम्स का ताल्लुक क्या है जो खाना खाते हैं आपके बोन रिजॉर्प्शन के ऊपर. HP axis, the stress factor increase the pH and hence increase the bone as well. There's increased osteoclastic activity and decreased osteoblastic activity. अरे माशाल्लाह ये तो आप सुबह से देख ही रहे हैं, रमज़ान के महीने में ये सौगातें. But we have to make sure, क्योंकि डायबिटीज़ में there's a vascular changes, there's a breakdown and altered microflora. So मुंह ने ठीक नहीं होना और बर्डन ने हमेशा बढ़ना है. और माशाल्लाह ऊपर से इफ्तारी के बाद हम ये च्यूइंग हैबिट छोड़ते नहीं हैं, ये इसके अलग मसाइल हैं. This is one patient here in Fatima Hospital. She is pregnant in second trimester. She emergency. We had to remove this, drain this. So pH का effect bone पे बहुत important है, इसको जानिए. That's very very important. Let's move forward quickly to the what to do now, because ये सारे patient diabetic हैं और ये आते हैं हमारे पास with this treatment. तो क्या करें? Brush your teeth, save a life, my slogan. Let's come to the end of the conversation कि brush करने को कह तो रहा हूँ, brush का काम क्या है? Brush is not to brush the teeth only, to massage the gums, to remove the bacteria as well. But if you do it wrongly, this will happen. दुनिया में कुछ चीज़ें कंपनी डिपेंडेंट होती हैं. I'm sorry. दुनिया में टूथपेस्ट बिक रहे हैं बहुत सारे कि आपके ये सारे गम दूर कर देगा और टूथब्रश पे कोई ध्यान नहीं है. ये ब्रश आपके बाथरूम में रखा हुआ है और इस पे इतने मसाइल पड़े हुए और आप इसको रोज़ाना मुंह में लेते हैं और साफ करते हैं. The loss of bacteria, fungus, viruses are there. So correct angle is so much important. अब सवाल ये है कि I present to you in the holy month of Ramadan, miswak, guys, this is important here. Because Prophet ﷺ पे मिसवाक फ़र्ज थी. क्यों फ़र्ज थी? विसाल होते हुए इस दुनिया से विरत फरमा रहे थे. अम्मा आयशा ने मुंह में उसको सॉफ्ट करके मिसवाक दी. क्यों दी? What's the importance here? Why it was for him? And why he says he recommend you to do it? So इसके फ़वाइद पता ही नहीं हमें. We think कि मौलवी साहब हैं, वो मस्जिद से उठाएंगे और मिसवाक डाल लेंगे. हमने इसको लिमिट कर दिया towards the मौलवीज़म only. हालांकि it's our responsibility as a healthcare professional to look scientifically कि इस डंडी में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं इस छोटी सी स्टिक के अंदर. But use it properly. In the Japanese restaurant, we learn appropriately with the style how to hold the chopstick. So learn to hold this and work appropriately. That's very very important. Because in the civilized world, शायद ब्रश हो ही नहीं लोगों के पास. हालांकि WHO बोल रहा है, अमेरिकन मैगजीन्स बोल रहे हैं कि मिसवाक
should be recommended. So we need to think globally and act locally. Spoken by WHO, there's a new guideline by WHO. He said by 2030, 80% of world population is entitled to essential or oral health care. वो उस पे काम कर रहे हैं. Miswak is antibacterial, guys, antimycotic. It works against fungus. It has analgesic effect. It works on MRSA. It works against bacteroids. It's antiplatelet. If you use regularly, it works very well for you. It has anticonvulsant effect. जब नज़ा का हाल होता है और इंसान थड़क रहा होता है, तो ये वहाँ भी काम आता है. Provided used regularly. Because इस पे स्टडी की लोगों ने. What I'm trying to say is, if a plastic brush with nothing chemical in it can work, think about this with bitter oils in it. It works beautifully. So you need to know how to hold this, how to work for this, क्योंकि मिसवाक पीलू की भी है, जैतून की भी है. They both are brilliant. So even literature has says miswak is very much. There's a nice hadith by Sahih Bukhari से Muslim कि अगर मुझे उम्मत की मुश्किल की फिक्र ना होती तो मैं इसे फ़र्ज करार दे देता. Why Prophet sallallahu alaihi wasallam has emphasized so much. और ये हदीस भी दिखा दिया आपको मैंने कि रमज़ान में फास्टिंग में मिसवाक कर सकते हैं. And you must do miswak. If you don't do miswak or brushing during the fasting, that will happen to you. Your sugar level goes up, your mouth ferment, lots of bacteria, lots of inflammation, and you will be again mess again. You can do miswak anytime. Pilu is recommended. How to do it, we can discuss later. इसका पूरा एक protocol है. So tongue scrape copper के मिलते हैं. This is the best way of tongue scrape, but don't do it while you're fasting. Do it without fasting. Preparation, ease of pangs, I've explained to you. So my conclusion, my last slides, it's a good alternative with toothbrush. I do brush in the morning and rest of the day I do miswak. It has many medicinal properties. It's recommended to improve oral hygiene. In my clinic, this is the part of my clinic, I give hadiya to all my patients free of cost miswak. Because ये एक हदीस ये सुन्नत हो जाएगी, वो सीख जाएंगे and सदके जारिया. So I do this in my clinic. So with these I conclude, you have to think holistically. Oral health is very, very important. Cleaning teeth is permissible in Ramadan. Hygiene is very important in Ramadan. अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक आयत तारीख सूरह ज़ारियात की नहीं पैदा किया जिन इंसान को बस इबादत के लिए, तो ये भी इबादत है. It is a responsibility. This for me only. उम्र भर मैं यूँ ही गलती करता रहा गालिब. धूल तो चेहरे पे थी. I didn't stop. आपका बहुत शुक्रिया. Thank you very much. If you have time, I have a small video to play quickly. Huh? I'll answer you. Let's quickly see the video. I'll answer you. Let's see the video. इसके बाद. In many ways, your mouth is the gatekeeper between the outside world and the rest of your body. Your mouth is teeming with billions of bacteria. There are more bacteria in your mouth right now than there are people on Earth. Over time, these bacteria can stick together and multiply. They form a colony, and the colonies can then join together, forming a thick layer called a plaque biofilm. This can eventually spread across every surface of your entire mouth. Your teeth, your gums, your cheeks, and your tongue. Every small space in your mouth provides the perfect environment for bacteria to thrive and for the plaque biofilm to grow, which it can do dramatically over the course of a single day. Your mouth's inflammatory cells are activated to kill the bacteria, but the bacteria can build strong defenses within the colony to stay alive. These inflammatory cells, which are designed to protect the body, can then cause harm in the form of gum inflammation, also known as gingivitis, the earliest stage of gum disease. People with diabetes are even more susceptible to gum disease because their blood vessels are compromised. The area between your teeth and gums is densely packed with intricate blood vessels. This was happening in diabetes. Normal everyday activities
can burst those tiny vessels. Then pieces of the plaque biofilm and bacteria can detach and mix with the blood, They set it giving down in bacteria coronary from the vessels, surface of your mouth kidney vessels, full access to the rest lungs, of your body. and brain. And for people with severe gum disease, new science suggests that these bacteria may link to other disorders, like heart disease, where bacteria may be involved in plaque buildup in the blood vessels, or pneumonia, where bacteria can create an infection in your lungs, or rheumatoid arthritis, a debilitating disease of inflammation in the joints, or preterm low birth weight in infants, which may be linked to bacteria passed from the mother to her fetus. Just to